effective communication skills. To be honest, I'm not that prepared with the subject, but I'll try my best. Effective communication skills. I would like to start with a thought that says the most basic of all human needs is the need to understand and to be understood. मतलब है कि जब किसी से हम बात करते हैं तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि the other person will understand me and whatever I am trying to tell him or her, she or he will also understand. That is a communication. Communication मतलब होता है बातचीत, एक दूसरे से बातचीत करना. और when we add skills, जब skills की बात होता है communicative skills, तो skills में आता है कि how are you giving your message to the other person, और आप उस पर्सन के हिसाब से, उसके मेंटालिटी के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से आप कैसे वर्ड्स यूज करते हैं और आप कैसे रेस्पॉन्स देते हैं और उनसे आपको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है. दैट इज रिलेटेड टू द स्किल्स. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, I strongly believe is very important in the classroom also. Not only in the classroom also, wherever you're in the society also, society में भी effective communication skill बहुत जरूरी होता है. If you have a good effective communication skill, then people are very interested to talk to you. But if your communication skill is not that good, then people will avoid you. इनसे कौन बात करेगा चलो. So that is very important. Being a teacher in the class, communication is very, very important. For example, a lot of research has shown that 50% is based on the knowledge of the teacher, how much knowledge you have about the subject you teach. Maths teach करते हैं, हिंदी teach करते हैं, संस्कृत teach करते हैं. Every subject has a particular teacher. Why? Because they are the expert of that particular subject. Now, I cannot go to the class being an English teacher. I cannot go to the class and teach Sanskrit or Hindi because I don't have that much of knowledge about that subject. So everyone is expert in their own fields. Now, when we talk about communication skill, 50% is knowledge. बहुत बार हमको बहुत सारे स्कूल में हमको दिखाई देता है कि टीचर जो है बहुत क्वालिफाइड है, MA, MTech and all those kind of stuff, BA and all. लेकिन जब वो क्लास में जाते हैं तो अच्छे से नहीं पढ़ा पाते. I have seen it in many cases. So research has proved that 50% is based on your knowledge and 50% is your communication skills. आप कैसे क्लास में बच्चों के साथ बात करते हो या फिर आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है, how do you teach them, you follow different kind of activities, आप कैसे follow करते हो, your body posture, body language is very important. That's why most of the schools have a dress code. School teacher के लिए dress code होता है क्योंकि वो ड्रेस कोड एक डिसेंट ड्रेस कोड होता है, सो दैट आपका जो लुक होता है, आपका जो पर्सनैलिटी होता है, दैट प्लेज द प्राइमरी रोल इन स्टूडेंट्स माइंड. स्टूडेंट क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा अगर चुनिए देखेंगे तो वो सारा कुछ टीचर से ही सीखता है, एवरीथिंग. सो अगर टीचर प्रेजेंटेबल नहीं है एंड टीचर इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट कम्युनिकेटिव स्किल्स, I think that plays a very, very important role in creating the future generation. Future generation क्या होता है? जो हमारे children होते हैं, the students, they are the future generation. So what I believe is students are the future of nation. That is why the role of teacher is so important in the society. It is through a teacher that generation of youngsters are deeply influenced. Overall improvement in a student can be expected when communicative skill for teachers is given due importance. जो अभी कुछ हमने बोला वो एक चीज है. Now, there is a famous saying, silence speaks louder than words.
There are two types of communication. One is verbal and another is non-verbal. Verbal मतलब जिसमें आप words use करते हो, शब्दों का use करते हो. For example, in the class. So you go in the class, the types of words, the types of phrases आप जो use करते हो class में, वो appropriate होना चाहिए. If you are going to class 10 and you're teaching class 10 students, और उनको उनके नॉलेज के हिसाब से आप वर्ड्स यूज करते हो और आप अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको टीच करते हो. नाउ यू कैन नॉट यूज द सेम वर्ड्स व्हेन यू गो टू द जूनियर सेक्शन. जूनियर सेक्शन में जाओगे तो फिर वही पैटर्न और वही वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते. इट हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल, ग्राउंड लेवल वाला, हाई वाला नहीं, ग्राउंड लेवल वाला यूज करना चाहिए. सो दैट इज verbal communication. Now another one is non-verbal communication. Non-verbal में क्या होता है कि आपको words use नहीं करते आप उसमें आप अपना gestures मतलब आपका क्या बोलते हैं इशारा. gestures को क्या बोलते हैं? हाव भाव यूज करते हैं. Your body language, क्लास में आप कैसे खड़े रहते हो, आप don't droop yourself. Droop मतलब अपने बॉडी को ऐसे करके जा रहे हो. So you have to be confident. Your the shoulders and chest should be off. ये सब जो होता है बच्चा हर एक चीज देखता है. How you go to the class, आप जाते हो, maybe subject जो आप teach करने वाले हो, that is very very interesting subject. For example, what can you have in interesting subject in maths? सबसे interesting क्या होता है सब maths? Menstruation. Menstruation is very nice, but I'm very afraid of menstruation. Depends on the different. Depends on the class. Someone likes calculus. Depends on the level. Like science में you have a lot of calculus. Yeah, differentiation and integration. Yeah, so since when I was in school also, I was very much interested in physics. Physics हमको बहुत अच्छा लगता था. So when you go to the class, आपके पास एक बहुत अच्छा subject है. You go to the class and you are also very excited कि आज मज़ा आएगा teach करने में, and the students are also excited कि आज तो मज़ा आएगा. But when you go to the class, you are not prepared. और आप क्लास में जाते हो, आप ऐसे होके जाते हो, your body posture is not good, and आपके mind में you have your own tensions running. Personal problems are always running in your mind, even if you are the student. So ये सब चीज़ें जो है आपको you have to clear your minds. बोलते हैं कि when you step inside your workplace, जैसे ही गेट से अंदर आते हैं, you have to forget about your personal problems, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक hindrance होता है, रुकावट होता है आपके performance में. Though it's very hard, but we can always try. So the thing is, you have to be always prepared. The kind of word that you use is very important. In short, I have prepared something over here. It's a communication cycle. Communication cycle is never one way. आप क्लास में जाते हो और आप बोलते जाते हो और आप सोच लेते हो कि सबको समझ में आ गया. Then you say, okay students, did you understand? और students जो brilliant students होते हैं, they answer कि yes sir, काम खत्म. So what I believe is when you go to the class, you have to focus on those students who are very weak and shy, जो बोलने में बहुत पीछे रहते हैं और घबराते हैं कि हमको लेकिन क्या होगा, लोग हम पे हंसेंगे, students हंसेंगे. So I think positivity is very important. Students पे positivity चलाना पड़ेगा हम लोगों को कि कोई नहीं, no problem. If you are not able to answer right now, it's okay. Another one is praise. Praise करना बहुत ज़रूरी है बच्चों. If someone is giving आप कोई question पूछते हो, what is the answer? What is the unit of mass? तो कोई student answer देता है तो आप उसको praise करिए, acknowledge करिए, oh very good, that's very nice. एक ही word बोलना है, good, nice, और उसको बहुत अच्छा लगेगा. Especially the junior classes, it's a psychological effect. जब आप किसी को praise करते हो, acknowledge करते हो, तो आपको अच्छा लगता है. So it's just one word, good, nice.
लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. And next time he will come back and he will try कि हम करेंगे आंसर. So that's how you can increase their knowledge and participation. So it's never one way. Communication is always two ways. अगर दो आदमी बात कर रहे हैं, दो लोग, तो आप बोलते जा रहे हो लेकिन दूसरा जवाब ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है वहाँ पे. सिर्फ मेरी डिक्टेटरशिप हो रहा है, एक बोल रहा है और दूसरे को सुनना है तो सुनना ही है. हाँ, सो इन द क्लास ऑल्सो एक सेंडर होगा जो आप हो सकते हैं और रिसीवर होगा आपके स्टूडेंट्स. और फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों का, स्टूडेंट एंड टीचर. सो स्टूडेंट और टीचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पढ़ाना चाह रहे हो, जो मैसेज आप दे रहे हो, मैसेज उसको एनकोड एंड डिकोड इज नथिंग टेक्निकल, इतना नहीं है. इस सिनेरियो में आप कंसीडर करेंगे तो एनकोड का मतलब है आप अपना सब्जेक्ट का जो इंफॉर्मेशन है वो आप किस तरीके से स्टूडेंट्स के आगे रख रहे हो और फिर वो स्टूडेंट्स उसी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से उसको समझ के अपने माइंड में डाल रहे हैं. सो रिसीवर कौन होता है? स्टूडेंट. और फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कर सकते हैं हम क्लास में कि जो वॉट एवर वी हैव टॉट इन द क्लास, वी कैन आस्क द स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड? We can ask some questions from the chapter to the students. Lot of teachers follow what happens in the classes, like chapter के last में जो questions है उसको धड़ाधड़ करवा दिए, बस हो गया. What I believe is whatever the chapter that you teach, we have to make questions out of the chapter और उनके पास रख दीजिए इसका आंसर दो. Then they will find the answer themselves. That's how they remember the whole chapter. पूरा चैप्टर उनको याद हो जाएगा एक एक कहाँ पे क्या है. सो फीडबैक इज वी कैन आस्क द स्टूडेंट कि ओके स्टूडेंट्स, व्हाट एवर वी हैव टॉट टुडे, आज जो हमने पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आया? तो कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं समझ में आया, तो आप फिर से समझाएंगे और आप उनको पूछ सकते हो कि ओके मे बी जो मेथड हमने फॉलो किया आपको समझ में नहीं आया होगा, सो डू यू हैव एनी सजेशन? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क स्टूडेंट्स what they think and what they want. तो वो नया नया आइडिया लेगा, सर इस तरीके से समझाएंगे ना. So that's how they improve their communicative skill also. Feedback is the only way to know whatever you have taught in the class has been understood by the student or not. Now there are different 7 C's of this is also by the research that has been taken out, 7 C's of communication. So as you can see on the board, there are different 7 C's. Can you read it in the comments? 7 C's. Can you read it loud? Loudly. Huh? The 7 C's. सर आपको पढ़ना है उसमें. 7 C's. Completeness. First is completeness, second is consciousness, third is consideration, fourth is clarity, fifth is correctness, and sixth is courtesy, seventh is completeness. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yeah, so the first one is completeness. Then completeness, though I am not an expert in Hindi, so some Hindi teachers संपूर्णता. Completeness means संपूर्णता. जो भी आप information दे रहे हो students को या किसी को भी, ये मत सोचिए कि this chapter or this topic is only about students and the school. This can be applied anywhere, whenever you are talking in your society also, anywhere. For parents also, parents should be also involved in it. Completeness is sampurnata. Whatever the information that you are giving to your students, it should be complete. ऐसा नहीं है कि आप you are going to teach one topic और उसके आपने prepare ही नहीं किया है, and while teaching in the class, any student can come up with any question and you might get blank. सोचिए कि जब टीचर ही ब्लैंक हो गया तो
तो उससे आगे तो आपको भी बहुत दिल पे लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। सो कंप्लीटनेस मीन्स फुलफिल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। कंसाइसनेस इज संक्षिप्तता। लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस दैट वी डोंट हैव टू कीप टॉकिंग, बहुत सारा वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स वन वर्ड कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। For example, in English we have go and come. Go and come are also considered to be a complete sentence. Sentence क्या होता है? जो एक that make a sense. समझ में आता है उसका। So go and come is also a sentence in a sense. So conciseness मतलब कभी कभार हमको कुछ छोटा छोटा words भी use करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जितना information चाहिए उतना ही दीजिए, to the points। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपने 10 पन्ना लिख दिया, समथिंग लाइक दैट ना। जितना चाहिए उतना ही इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कंसाइसनेस, एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज सोच विचार। विचार से सोच विचार कहाँ से आएगा? अगर आप उसको प्रिपेयर करके आएंगे तो कंसिडरेशन तो हो ही जाएगा। क्लैरिटी, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू टीच, क्लैरिटी कम्स विद प्रेपरेशन अगेन। जितना आपको नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में उतना क्लैरिफिकेशन होगा। करेक्टनेस, courtesy and concreteness. So you can understand the words yourself. These seven C's were discovered by Scott M. Gottlieb and Alan H. Center. That was the University of Wisconsin. Wisconsin is in America. तो वहाँ से रिसर्च के मुताबिक ही किया गया है ये सब points which are very important. Now if we talk about what is communication, whether I have told a lot of things about communication, do you have anything to share about what is communication? What is an effective communication? Anybody wants to say? Yes. Effective communication means talking and listening as well. Because if you, I have heard somewhere that if you are talking, then that means you are repeating the same knowledge you have. But if you are listening, you are receiving your new knowledge. That's very nice. That's right. So communication should be in both ways. Exactly. Now that brings another point. वो दूसरा point लेके आता है listening skills. If a good communicator is always a good listener. Yeah. जब आप अच्छे से सुनते नहीं हो तो आप उसको अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हो। So always listen before speaking. जब आप अच्छे से listening नहीं करोगे, the other person he might be trying to say something else, कुछ और बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपका आदत है कि आप नहीं सुनते हो अच्छे से, so आप अपनी communication को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। So one of the most important thing of communication, effective communication, is listening. What do you say? है ना, listening बहुत important है। अगले व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है। सर्वोत्तम श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। सर्वोत्तम श्रोता अच्छा सुनने वाला ही अच्छा वक्ता बनता है। जी, अभी हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं हिंदी। Good listener will be good orator. Good communicator is always a good listener, something like that, huh? Okay. Talking about the non-verbal communication skill. Non-verbal communication skill में क्या क्या आता है? Body language is very important. Body language में क्या होता है? You smile, आपका eye contact, and your gestures and your tone. Tone is very important. आपके voice का tone जो होता है उसमें rise and fall होना चाहिए। अगर someone is speaking to you, अगर वो कुछ बोल रहे हैं आपको happily बोल रहे हैं और आप sad होके जवाब देंगे तो वो
कम्युनिकेशन का जो वार्तालाप है वो अलग सा रूट ले लेगा। हाँ, इफ समवन इज वेरी हैप्पी, ओके, आई हैव won a lottery of 50 lakhs, तुम्हारा दोस्त आके आपको बोलते हैं कि हमको 50 लाख का लॉटरी लगा है और आप बोलते हो ओके, हाँ, तो इसका मतलब है कि he will understand कि oh he is not happy, he is jealous। लेकिन if he tells you the same thing और आप उसको जवाब देते हो oh okay that's very nice, तो वो सोचता है कि हाँ ये भी खुशी, चलो इसको भी 25 लाख दे ही देते है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो रिएक्शन होता है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर स्टूडेंट्स, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ पढ़ा रहे हो और आप अपने ही यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हो और ऐसे चले जा रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट हैपेंस इन द क्लास आल्सो। और टीचर पढ़ा रहा है, अपने ही धुन में व्यस्त है एंड सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग एट द बैक, पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। और व्हाट हैपेंस इन माय क्लासेस, हम जब पढ़ाते हैं तो अगर एक भी स्टूडेंट इधर उधर देखता है तो आई गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो मेरा नज़र वहाँ पे चला जाता है, तो हम उसको बुला लेते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए। और ध्यान कैसे लाएंगे, इट्स नॉट स्टूडेंट्स फॉल्ट, स्टूडेंट का फॉल्ट नहीं है कि ये वो आपको नहीं सुन रहा है, आई थिंक इट्स टीचर्स फॉल्ट। Sometimes it's students' fault also. That's why I punish them sometimes. But most of the time I think हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। और आप अगर अच्छे से प्रिपेयर हो और आपको पता है कि आप अच्छे से टीच कर रहे हो, फिर भी अगर कोई वहाँ पे कुछ करता है तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाते हो कि ही शुड नॉट डू लाइक दैट, और आप उसका अटेंशन खींच लेते हो। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो क्लास में तो कोई क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, आप सिर्फ पढ़ाते जाओगे, वो चलने दो उसको। हाँ, इसका मतलब है कि आप अपने सब्जेक्ट को खुद रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। Hearing and listening, and these are two different things कि in the class also students ask me, so hearing मतलब भी सुनना ही होता है और listening मतलब भी सुनना ही होता है, इसमें क्या फर्क है? Yes sir, they are different. Yes. Means listening होता है कि आप बातों को सुनने के साथ इंटरप्रेट कर रहे हो, तो बातों को अच्छे से समझ रहे हो। हाँ। Hearing means आप वर्ड सुन लिए, उसका मीनिंग समझ नहीं आया, क्या है बस सुन लिया। Exactly, thank you very much. Hearing मतलब होता है कि बहुत अच्छा कहावत है हिंदी में, चलो एक कान से सुनो और दूसरे कान से उड़ा दो। हाँ, दैट इज हियरिंग। मतलब कोई बोल रहा है और आप सिर्फ सुन रहे हो उसको, लेकिन आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। ना लिसनिंग इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। लिसनिंग मतलब होता है कि आप पूरा ध्यान से उसको सुनते हो और दिमाग में वो बात चलता है आपका, और आपका रेस्पॉन्स प्रॉपर जाता है, प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हाँ, सो लिसनिंग कम्युनिकेशन स्किल में जो लिसनिंग होता है उसको हियरिंग से मिक्सअप मत करिएगा। हियरिंग इज जस्ट लाइक आप किसी को फील करवाते हो हाँ हम सुन रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। लेकिन लिसनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज टेलिंग यू समथिंग, कुछ बात बता रहा है कि अरे मेरे घर में ऐसा हुआ, yesterday I went to the house and there was a big rat in my room, हाँ, और दूसरा बोल रहे हाँ हाँ हाँ, तो आप सोचते हो वो होता है हियरिंग। बट लिसनिंग इज लाइक अगर वो अच्छे से सुन रहा है तो ही और शी कैन फील इट, वो अपने माइंड में एक इमेज बनाएगी कि हाँ ऐसा हुआ होगा, एक बड़ा रैट होगा और ये आया होगा और बहुत भयानक होगा, तो ही और शी विल गिव रिएक्शन, ओह कितना बड़ा रैट था। सो दैट इज लिसनिंग। किसी चीज से ध्यान से सुनना, पूरा फोकस से सुनना, दैट इज लिसनिंग। So in case of communicative skills, we need listening rather than hearing. In the class also, lot of students do hearing. They don't listen to you. आपको listen नहीं करते हो, तो उसमें दोनों तरफ का fault हो सकता है. It could be the fault of the teacher also and the student also. Now, how we can make it right? We can make our class more interesting. That's why to prepare your subject, whatever you're trying to teach, the subject, the topic in your class, preparation is very important. अगर आप prepared हो तो
कुछ भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर लोगे, दैट्स नॉट अ बिग डील. Listening is the absorption of the meaning of words and sentences by the brain. Listening leads to the understanding of facts and ideas. तो listening क्या करता है? ये आपके ब्रेन में जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उस वर्ड को ब्रेन में अच्छी तरीके से ले जाता है, उसको एनालाइज करते हैं, एंड ये लिसनिंग अल्टीमेटली क्या बनाता है? एक कॉन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन को वेरी इफेक्टिव बनाता है एंड इंटरेस्टिंग बनाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, there is a famous saying that a man is seldom better than his conversation. This was a famous saying given by it's a German proverb. A man is seldom better than his conversation. अगर एक इंसान अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, अच्छे से बात नहीं कर सकता है, तो वो उसमें कुछ कमी है, बिल्कुल है. Next is, as I said, listening is very important. Listening is very important. There is a famous saying, अगर listening important नहीं होता था और सिर्फ बात करना important होता, if only talking was more important and listening was not important, then भगवान आपको दो मुंह देते और एक कान, है ना? So there is a famous saying by Mark Twain. Mark Twain, a famous writer, he said that if we were supposed to talk more than listen, if we were supposed to talk more than listen, we would have given 2 mouths and 1 ear. अगर बोलना उतना ही इम्पोर्टेंट और सुनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो हमको शायद भगवान दो मुंह देते और एक कान यहाँ पे. But this is a very meaningful saying that I take it very seriously. So that's why it's always better. Even in your practical life also, whenever you're talking to someone, you might have come to a stage. एक stage में आता है जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो बाद में हम realize करते हैं कि हाँ पहले हमको सुनना चाहिए था इसको, फिर बाद में बोलना चाहिए था, हमने उसको समझा ही नहीं और हमने अपना बात रख दिया. So listening is very important. That's why I try to listen to the people first before speaking. Don't take it too personally. What makes a good communicator is an active listener, an effective presenter. वो कैसे अपने चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने. A quick thinker. कितना उनका thought process, how fast is it? A win-win negotiator. ये थोड़ा tricky है. Value of listening. Listening to others is an elegant art. Good listening reflects courtesy and good manners. जब आप अच्छे से किसी को सुनते हो तो वो एक good manner और एक good behavior भी reflect करता है ना? जब कोई आपसे बात कर रहा है और आप अच्छे से सुनते हो उसको, तो वो बात करने वाले को भी अच्छा लगता है कि he is a very good listener. तो हर वक्त वो आप ही के पास आएगा. In a school also, स्कूल में भी कुछ favorite teachers होते हैं और हर वक्त जब when the students have problem, they go to that teacher only. उनके के पास जाना है और उनको पूछते रहे कि सर ये problem है. No matter the subject problems ही नहीं, any kind of problem that they are facing, they have a particular teacher in the school with whom they feel comfortable. ऐसा कि बहुत कम students होंगे जो हमारे पास आते हैं, लेकिन maybe the same students will go to Avni sir के पास जाएंगे और बोलेंगे उन्हें कि sir this is the problem. So we have to create that what means a good listener or good communicator reflects courtesy and good manners. As you can see, courtesy मतलब होता है शिष्टाचार. जब कोई आपसे बात करता है तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? Humble वाला reaction, humble reactions and appreciative reactions. Listening carefully to the instructions of the superiors improve competence and performance. Superiors in the sense like
आपसे जो सीनियर्स हैं या आपसे जो एक्सपीरियंस है उनके बातों को आप सुन के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो आप. सो इट इज़ ऑलवेज सेड कि a growing child should spend most of its time with the elders. जो गांव के बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ अगर बैठेंगे वो लोग तो वो काफ़ी कुछ सीखते हैं अच्छा और अच्छे से, rather than spending time with their own age people. Okay, essentials of communication. Do's. Communication करते हो हमको क्या क्या चीज़ याद रखना है या फिर what we should do in order to communicate effectively. Always think ahead about what you are going to say. Think before you speak. है ना? So बहुत सारी instances आता है. In the morning also I was going through this sentence, think before you speak, and at the same time something happened in front of my eyes जो हम उसको अच्छे से relate कर सकते थे. Don't take it, it's just an example. तो मतलब sometimes what happens like situation comes और वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका मूड ठीक नहीं होता है. Most of the time we have fluctuation in our mood. हमारे mood में बहुत fluctuation होता है. And the weather is also very cold these days. Yesterday it was nice and sunny, but today it's completely opposite. So you get a lot of complication when you come in the morning also. Especially when you're coming by the bike and all, it's very hard to ride your bike or speed up. So it gets late. So all of a sudden you come to the school and the management says, "Oh, you are late," and you see on the register that you are marked red. Then you get angry. Please relate with the statement. I'm not trying to point out any specific character over here. It's just the situation, So there's a red mark and you get like, oh, this is not done. Every day I come on time and today I just got late by 5 minutes, and that also because of the weather, and they have marked me red. This is not done. And then you go to the principal or you go to the management and you say, "So what is this? This is not the way. Every day I come on time." And principal says like, "Sir, discipline is discipline." All of a sudden you get angry, you don't think anything and you say like, "Okay, you keep your discipline, then let me go, I'm going. I don't want to teach. I don't want to go to the class." Then you go outside 5 minutes के बाद थोड़ा शांत हो जाता है and you thinking, I could have talked. So it's just an example. Don't take it too personally, but it's a very relatable example because we are associated with the school, and all these kind of disciplinary things are going to come again and again. So always think ahead about what you are going to say. क्योंकि जो आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलता है वो बहुत घातक होता है और बहुत इफेक्टिव होता है, और वो एक बार निकल गया तो उसको पैसिफाई करना या उसको करेक्ट करना या उसको सुधारना काफ़ी टाइम लग जाता है. I think you can relate to yourself. That's a very practical experience. Use simple words and phrases that are understood by everybody. In the teaching line also, when you're teaching in the class, some teachers are very good in Sanskrit and Hindi, and some teachers are very good in English and all. So when you're teaching in the class, you might have a vast knowledge about different words. बहुत वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होगा, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज द राइट वर्ड्स, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज सिंपल वर्ड्स. ग्राम वर्ड्स होता है, सिंपल से सिंपल रखना चाहिए ताकि आप देखो समझ में आए, है ना. Like for example, some of the words over here like संक्षिप्ता, नैतिकता, ये सब जो words हैं, for me it's like a different words name, but yeah. So but
it's always good to know the new things. Increase your knowledge on all subjects. You are required to speak. आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसमें कोई एक सब्जेक्ट में लाइक इन इंग्लिश ऑल्सो व्हेन यू आर टीचिंग इंग्लिश उसमें बहुत सारा चीज़ें आ जाता है, कभी कभार साइंस भी आ जाता है कोई भी चैप्टर में, कभी कभार मैथ्स भी आ जाता है. So it's always better to have good knowledge, not good but some knowledge about all the subjects. And what I say is, my primary saying is, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हो उसको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे घर से तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम. और आपको सेटिस्फैक्शन भी लगेगा, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक व्हेन आई एम अबाउट टू टीच अ न्यू चैप्टर, आई सिट in my room and I find out all the Hindi meanings. जो भी difficult words है उसका हिंदी meanings निकालते हैं हम और इंग्लिश मीनिंग भी निकालते हैं, ताकि जब क्लास में जाके हम पढ़ाते हैं और वो क्लास करने के बाद इतना अच्छा लगता है हमको, हम संतुष्ट हो जाता है कंटेंट्स कि आज हमने अच्छा पढ़ा है और पूरा दिन अच्छा जाता है. एक टीचर को अच्छे से पता होता है कि आज का क्लास उसका कैसा गया है. So if you are prepared, you are very confident, and whatever you are going to say, you are very confident about that. जो भी हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 100% सही है. So when you are 100% right, there is no chance of any mistakes, and there is always a contentment. Contentment मतलब संतुष्टता होता है मन में कि हमने अच्छा पढ़ा है ना. Speak clearly and audibly. अच्छे से बोलिए, मतलब स्पष्टता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके स्पीच में. और जो पीछे बैठे हैं बच्चे उनको भी अच्छे से सुनाई देना चाहिए. ऑडिबली मतलब ऑडिबल होना चाहिए, है ना. चेक ट्वाइस विद द लिसनर वेदर यू हैव बीन अंडरस्टूड एक्यूरेटली और नॉट. फॉर एग्जाम्पल फीडबैक. After you teach the subject in the class, you can always ask the students like, did you understand? Not like that कि yes or no में ही खत्म कर दिया. Then you can pick any student and ask whatever you have taught, or you can tell the student to summarize what you have just taught. जो भी आपने पढ़ाया किसी भी स्टूडेंट को उठा के आप बोल सकते हो कि चलो हमने जो पढ़ाया उसको छोटे में बताओ क्या पढ़ाया. हाँ, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उस तरीके से आपको एक फीडबैक भी मिलता है अपने आप के ऊपर. इट्स ऑलवेज गुड टू गेट फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट. ये मत सोचिए कि हम तो टीचर है, स्टूडेंट से क्या फीडबैक लें, हम तो टीचर है. बट इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क द स्टूडेंट कि हमने कैसा पढ़ाया, आपको कैसा लगा. तो कोई स्टूडेंट बोल भी देता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया, बोल देते हैं, तो उसमें फिर गुस्सा नहीं करना है कि हाँ नहीं करना है. देन यू कैन आस्क द स्टूडेंट कि ओके आपको अच्छा नहीं लगा है तो फिर हाउ कैन आई इम्प्रूव. आपको क्या लगता है कि हम कैसे इम्प्रूव करें. शायद वो बोल दे आपको कि ऐसे करिए, से या फिर वो बोले कि नहीं सर हम मजाक कर रहे. हाँ, कुछ भी हो सकता है. इन केस ऑफ एन इंटरप्शन always do a little. Yes sir. If a notorious student doesn't understand and he will ask again and again, sir, which is समझ ही नहीं है, then will you judge yourself that your way of teaching or your communication was not worthy? No, absolutely not. That's a very good question. Yes. Like he said, like there will be always a notorious student in the class. Chances They are- always try to pull your leg. Chances are there are chances 95% that Oh, the good 90. good students are not going to say that thing. Yes. There are 5% of chance. Some mysterious student is always in the class who will try to pull your leg and try to test your knowledge. Now that's up to you. सर That's- नॉलेज से कुछ समझ नहीं आया. हाँ, और नहीं वही. समझ में आया तो सर कुछ एक बार डिस्क्राइब करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, डबल से करने के बाद फिर सर समझ नहीं आया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. Exactly. So, when you spend even 1 day or 2 days आप किसी क्लास में स्पेंड करते हो तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है. And if that student, if you are trying to explain the same thing and 80% of student is understanding, and that 80% also contains some students who are not that good,
उसको भी समझ में आ रहा है लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। तो उसका मतलब ये है कि he is not paying good attention to you or he is just trying to create a useless humor in the class. So उसको आपको avoid करना आना चाहिए. Okay, I'll take care of you later. You come to me in the lunch period. I will give you some extra time. Yes. From David did that. Extra time in his own way. In case of an interruption मतलब for example in our school right now lot of construction is going on and lot of annoying sounds are there. और कभी कभार हम for example right now someone was coughing तो शायद किसी ने नहीं सुना होगा हमने और क्या कहा. So little recap is always good. जो आपने पढ़ाया है उसको थोड़ा सा recap कर दीजिए. आपको लगता है कि साउंड की वजह से उन लोगों ने नहीं सुना होगा. So little recap is always good. It's very useful. Always pay undivided attention to the speaker while listening. This is also very important in the class. टीचर की माइंड में क्या सेट होता है, माइंड सेट क्या होता है कि हम तो जानते हैं सभी स्टूडेंट को कौन कौन सा कैसा कैसा. सो ऐसा हर बात नहीं करना है. समटाइम्स सम स्टूडेंट्स हैव अ पॉजिटिव चेंज इन देमसेल्व्स. किसने सोचा होगा कि नहीं हम तो अच्छा करेंगे. हाँ, सो ऑलवेज पे अनडिवाइडेड अटेंशन. आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो और वो बोलने लगते हैं तो आप सोचते हो कि अरे इसको तो आप जानते हैं ये तो अच्छा नहीं है. हाँ, तो आप उसको अच्छे से ज्ञान नहीं देते हो. बट देयर इज अनदर स्टूडेंट हु इज अ गुड स्टूडेंट और वो हाथ उठाता है, उसको आप उठा के बोलते हो कि बोलो और उसको आप अच्छे से सुनते हो. दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना. सो ऑलवेज पे अनडिवाइडेड अटेंशन टू द स्पीकर. चाहे कोई भी स्टूडेंट हो उसको अच्छे से सुनिए और उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि भेदभाव हो रहा है. दैट्स वेरी dangerous. So actually this effective communication skill, it's a very big topic, बहुत बड़ा topic है, and we are running out of time also. So we will continue this topic in some other session with some more knowledge. I thank you very much for all for your time, and I hope I was able to impart some knowledge about effective communication skills today. Thank you very much. Have a nice day. Thank you, sir.